दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। हम आपको इस चैनल के माध्यम से बिजनेस के नए नए तरीके बताते हैं, जिससे आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ एक्सरसाइज नोट्स बुक, स्कूल नोटबुक, राइटिंग रजिस्टर, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग। आइए जानते हैं इसके बारे में। 4 लाख लगाकर हर साल कमाए 7 लाख रुपए। इस बिजनेस में लगाएं पैसा। अगर आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें पहले साल से ही ठीक ठाक मुनाफा होने लगे, तो ऐसा बिजनेस शुरू करना बहुत ही सही समय पे आपने सोचा है। अप्रैल में नया फाइनेंशियल ईयर तो चलता ही है, लेकिन साथ ही अप्रैल से नया एजुकेशन भी शुरू हो जाता है। यदि आप एजुकेशन से जुड़ा बिजनेस शुरू करते हैं जनवरी फरवरी में, तो अप्रैल से आपको अच्छा खासा रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। ऐसे बिजनेस को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लोन भी आसानी से मिल जाता है, जिस कारण आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ता है। आज मैं आपको ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताऊंगी, जिसे शुरू करने के बाद आप हर साल इन्वेस्टमेंट से 2 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। बुक प्रिंटिंग यूनिट लगाएं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to
to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. अप्रैल से फाइनेंशियल एरिया और एजुकेशन एरिया में शुरू होने वाला है सारी चीजें। इस वजह से अप्रैल में नोटबुक की डिमांड ज्यादा होती है। यदि आप जनवरी में ये बिजनेस शुरू करते हैं तो 2 महीने में आप अपना बिजनेस अच्छी तरह जमा सकते हैं। इन 2 महीने के दौरान आप अपना नेटवर्क भी खड़ा कर सकते हैं और अच्छी खासी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ताकि डिमांड होने पर आपके पास नोटबुक की कमी ना रह जाए। इसके लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, आइए देख लेते हैं। आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 4 लाख रुपए होने चाहिए। इसके बाद आप मुद्रा स्कीम के जरिए बैंकों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार द्वारा तैयार की गई प्रोजेक्ट प्रोफाइल के मुताबिक आप 9 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल लोन और 3,50,000 टर्म लोन ले सकते हैं। इस तरह आप 16,50,000 का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। कैसे करें प्रोजेक्ट की शुरुआत, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि अब सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, तो रजिस्ट्रेशन कराना बेहद आसान हो गया है। इसके बाद आपको मशीनरी खरीदनी होगी। आप जानते हैं कितना होगा प्रोडक्शन। मुद्रा स्कीम के तहत सरकार द्वारा जारी की गई प्रोजेक्ट प्रोफाइल के मुताबिक आप साल भर में 2 लाख नोटबुक, 40,000 नोटबुक तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आप अगर 150 पेज की नोटबुक बनाते हैं तो उसकी होलसेलर रेट 22 रुपए, 100 पेज वाली 32 और 50 पेज की 3 रुपए रख सकते हैं। और यदि 1 साल में आप ये सब बेच देते हैं और आपको लगभग 7 लाख का मुनाफा होता है, तो ये आपके लिए बहुत है और ये साल दर साल बढ़ता ही जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की टिप्स, जिससे आप बहुत ही जल्दी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।